Okay, so we have studied about VLAN in previous videos and we have studied about VLAN trunking. This is the last concept of VLAN and it eventually came into existence because whenever it wants to configure the same type of VLAN across different switches, how to do or how to deal with this. So this is the solution. Let me tell you the problem first and then we will come up with the solution. यहाँ पे देखो 6 स्विचेस है S1, S2, S3, S4, S5 सॉरी 5 स्विचेस है और अपने को बोला गया है कि हर स्विचेस में ओके इन एवरी स्विच कॉन्फ़िगर दिस मेनी VLANs VLAN 2 VLAN 6 okay we have studied in the past how to create a VLAN and how to do this and also how to perform the trunking part. यहाँ पे देखो यहाँ पे the day-to-day activities of a network admin is to maintain the switches and maintain the database of a network. यहाँ पे शायद आपको लगेगा कि configuring the switches in configuring the VLAN in 5 switches is not an difficult task. आसान है, बहुत ही आसान है. हर एक में जाके करना है तो एक 5-10 मिनट में करेगा. समझ लो अगर यही सिस्टम रियल टाइम में ओके in real time if we have to perform this in 30 switches, if we have to perform the same in different switches 50 different switches तब क्या करोगे. हाँ तब ये शायद डिफिकल्ट हो सकता है. 30 switches 40 switches 50 150 100 200 तब क्या 200 में तो आप जब एक मशीन में VLAN कॉन्फ़िगर करोगे S1 में तब तक 200 स्विच कोई तो एक्सेस करके कुछ तो करके क्या पता क्या हो जाएगा. So maintaining the sync between all the switch or maintaining or creating the VLAN in all the switch is a tedious task. And eventually Cisco come up with the solutions in this. Okay. And the solution is called as VTP या Virtual Trunk Protocol. कुछ ऑथर्स ने इसको VLAN ट्रंक प्रोटोकॉल भी बोला गया है. VTP is VLAN trunk protocol या virtual trunk protocol, almost one and the same, there is no change. Now let us try to understand कि ये काम किस तरह से करता है. यहाँ पे अपने को सिर्फ एक चेंज करना है और we have to just make one change. इन स्विचेस में से एक स्विचेस को अपने को एक सर्वर बनाना पड़ेगा. We have to make one main switch as the server and remaining switches as a client. Note it down, please note it down. Okay, all the switches are remaining switches as a client. मैं जैसे ही इनको क्लाइंट करता हूँ अभी क्या होगा. द मोमेंट आई मेक दिस स्विचेस एज अ क्लाइंट मुझे सिर्फ सर्वर पे ही कुछ चेंजेस या VLAN क्रिएट करने पड़ेंगे अपने आप और ऑटोमेटिकली द क्लाइंट this information is replicated in all the respective client fields. अपने आप ही इसका रेप्लिका कॉपी होके सर्कुलेट हो जाएगा. मतलब मुझे स्विच 2 में फिर से VLAN बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्विच 3 में फिर से VLAN बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्विच 4 में फिर से VLAN बनाने की ज़रूरत नहीं है, and so as in the case of switch 5. Just one change, everything the replication happens all in all. Let us say
आई क्रिएट VLAN 6 to VLAN 65, मैं इसे रीनेम करता हूँ ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसका रेप्लिकेशन या इसका सिंक्रोनाइजेशन अपने आप पूरे स्विचेस में सर्कुलेट होके अपडेट होता जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट। I hope you got the idea. I hope you understand the concept. Whenever it comes in terms of configuring VLAN across many switches, in masses, 40s, 50s, 100, 200, in order to make these things automated, or in order to make this process centralized way, in a centralized way, the concept is called as VTP, Virtual Turn Protocol. What happens in this concept? One switch will be acting as a server, and the other switches will be acting as a client, and all the clients are connected to a server to some way, to somehow. The moment I connect this machines or these switches to a server, I just have to update, or I just have to make a change, or I just have to make an addition in one switch, which is the server. Automatically the changes happens, or the database creates in all the respective clients as well. This is what the concept of VTP is. Hope you understand the concept, hope you understand the need of VTP. And in the next video हम ये कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन पैकेट ट्रेसर में कि ये क्रिएट करते कैसे हैं, और VTP के अलग अलग मोड्स कौन से हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर watching. Hope you're understanding the videos.